Assalamu alaikum students. How are you? ओके चले बेटा हम ये क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 आप देखें. अच्छा इसमें जो है आप देखें स्टेट द केमिकल सब्सटेंसेस दैट आर एक्सक्रीटेड बाय द ह्यूमंस. राइट, तो केमिकल सब्सटेंसेस ओवरऑल जनरली वी हैव टू आंसर व्हिच आर एक्सक्रीटेड बाय द ह्यूमंस. वो कौन कौन से हैं इसमें जो है बेटा. इसमें अच्छा इसमें आप देखें स्टेट द केमिकल सब्सटेंसेस में कार्बन डाइऑक्साइड इज द chemical substance which is harmful and it should be removed from the body, so it is excreted out through the lungs. कार्बन डाइऑक्साइड. अच्छा इसके अलावा जो दूसरी चीज है आप देखें दिस इज फॉर 3 मार्क्स. राइट, सो वी हैव टू राइट डाउन द 3 आंसर्स. कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है दैट इज यूरिया. ठीक है, यूरिया हम अलहदा लिख लेते हैं या हम कलेक्टिवली जो है यू कैन राइट डाउन नाइट्रोजीनस प्रोडक्ट्स. ठीक है, उसमें यूरिया, क्रिएटिनिन और यू कैन राइट डाउन नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स एंड इन ब्रैकेट मेंशन डाउन यूरिया, क्रिएटिनिन एंड यूरिक एसिड. राइट. अच्छा एक और भी हम लिखते हैं. इसके अलावा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वाटर इज एक्सेस वाटर इज आल्सो कंसीडर्ड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. सो इंस्टेड ऑफ वाटर हम यहाँ पर एक्सेस ही वाटर लिखते हैं. एक्सेस वाटर that is also the excretory product. right. अच्छा इसके अलावा जो है हम अच्छा बेटा you will not write down in this in the form of points, you will write down in the form of a sentence. So in front of carbon dioxide you will write down urea, so you will have more space to write down the more products if you want to write down. right. So excess water के बाद जो है हम इसमें excess जो hormones हैं, right, hormones, enzymes, hormones, drugs, or the broken down toxic substances, bile, they are also the excretory products. Bile pigments, right? Hormones, they are also the excretory products. After hormone has performed its function, it's broken down by the liver, and then the excretory products are removed from the बॉडी. बट दिस द नाइट्रोजनस प्रोडक्ट, तो नाइट्रोजनस प्रोडक्ट को हम यूरिया में कंसिडर कर देंगे. नो नीड टू राइट डाउन द हार्मोन्स, आप बाइल पिगमेंट्स लिखते हैं. राइट. So these 3 are sufficient: excess water, nitrogenous waste products, and carbon dioxide. This is for 3 marks. So 3 जो है these are the sufficient, but you can also write down bile pigment, the 4th one. Right. अच्छा अब हम नेक्स्ट देखते हैं what is the examiner asking in the next part, and this is explain how each of these substances are excreted. चले अब हम 1 by 1 बेटा इनको डिस्कस करते हैं. दिस इज आप देखें दिस इज फॉर 7 मार्क्स. राइट, तो हमने 7 मार्क्स के लिए इसको कैसे अटेम्प्ट करना है. पहला जो है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड जो है हाउ इट इज रिमूव्ड, हाउ में हम प्रोसेस भी बेटा मेंशन कर देते हैं कि इट इज बीइंग रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ऑस्मोसिस, और हम इसके साथ साथ यहाँ पर ऑर्गन भी मेंशन कर देते हैं थ्रू विच दीज एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी. राइट. चलिए तो अब हम देखते हैं पहला विच इज द कार्बन डाइऑक्साइड. हाउ इज कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी. दिस इज रिमूव्ड एक्चुअली बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. राइट, एंड डिफ्यूजन के अलावा जो है this is removed by the process of diffusion or okay, this is diffused by the process of diffusion. और ये कहाँ से diffuse out होता है. this is diffused out through the lungs. तो आप यहाँ पर देखिए 3 मार्क्स या 2 मार्क्स जो मैक्सिमम हमें इस स्टेटमेंट के मिल जाएंगे. कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड फ्रॉम द lungs by the process of diffusion. अच्छा diffusion यहाँ पर हम लिखेंगे और diffused from the blood capillaries to the lungs. Excess carbon dioxide is diffused from blood capillaries into the lungs and they are removed when we exhale out. Right. अच्छा अब दूसरा जो है दूसरा हम डिस्कस करते हैं. जो दूसरा प्रोडक्ट है that is the
यूरिया, ठीक है। यूरिया एंड एक्सेस वाटर हम इकट्ठा भी कर सकते हैं या सेपरेट भी कर सकते हैं। चले हम पहले देखते हैं वाटर को। सेकंड जो है वाटर हम डिस्कस करते हैं। थर्ड जो है वो हम यूरिया डिस्कस कर लेंगे। जब हम वाटर कर लेंगे तो इसमें यूरिया वाला पार्ट भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बट हमने यूरिया वाले पार्ट को दोबारा करना है। अच्छा, वाटर जो है बेटा, एक्सेस वाटर इट इज रिमूव्ड थ्रू स्वेट। अच्छा, स्वेट के बाद इट इज रिमूव्ड थ्रू यूरिन। अच्छा, यूरिन में जो है अगेन फ्रॉम glomeruli to from blood capillaries, glomeruli to Bowman's capsule, right? It will diffuse by the process of osmosis, ये भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, जब स्वेट बेटा बनता है तो तब भी ये कहाँ से जाता है? फ्रॉम sweat duct. From blood capillaries, excess water is diffused from blood capillaries से ये जाएगा sweat duct, right? अच्छा, then sweat pore and then it will be removed from body in the form of sweat, right? ठीक है, ज्यादा डिटेल हो जाएगी, this is more sufficient. अच्छा, यहाँ से हमने स्वेट से इसको रिमूव कर दिया है। सेकंड जो है यूरिन हो गया। इसके अलावा जो थर्ड है थ्रू विच द एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड, दैट इज ड्यूरिंग एक्सेलेशन। थर्ड इज व्हेन वी एक्सेल आउट एयर, इन एक्सहेल्ड एयर एक्सेस वाटर इज ऑल्सो रिमूव्ड। अच्छा, जो फोर्थ है दैट इज विद feces also excess water is removed, right? So here आप देखें, for water we have written 4 methods through which the excess water is removed. This is sweat, this is urine, and this is exhaled air, and fourth is the feces through which the excess water is removed, right? और जो carbon dioxide है that is removed from the lungs by the process of diffusion, राइट ये भी हो गया है। अब जो है हम नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स के बारे में भी लिखते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो भी, और उसके अंदर बेटा जो वाटर है वो भी ऑटोमेटिकली उसके अंदर ही आ जाएगा, राइट? सो जो यूरिया है ओवरऑल, हम इसमें वाटर को भी मेंशन कर देंगे। यूरिया जो है एक्सेस यूरिया, how it is removed? It is removed through kidneys, right? Acha, from glomeruli it enter into the Bowman's capsule pathway. We have to write down Bowman's capsule, then renal tubules, then it will enter into the renal tubule, then from renal tubule it will enter into the renal pelvis. Pelvis will take it to the ureter. Ureter will take it to bladder, right? And bladder will remove it out through the urethra, right? So इसमें यहाँ पर हमने मेन जो है इसको बेटा आप लिख रहे हैं, देयर इज नो नीड टू राइट डाउन। ये जो हमने यहाँ पर सेंटर में पॉइंट्स लिखे हैं, these points there is no need to write down these points because it will be then beyond the requirement, right? So यहाँ पर जो है हम इन चीजों को भी मेंशन नहीं करेंगे। excess urea is removed through kidneys and this is the pathway through which it is removed.
along with the excess urea, because some water and salts are also removed through this part. तो इसके साथ साथ it's better कि हम यहाँ पर अगर water and salts भी साथ ही mention कर दें, excess water. ठीक है, मैं नीचे लिख देती हूँ excess water and excess हम salts भी लिख देते हैं. Excess salts are also removed through this pathway. Right, the excess water and salts are also removed through the kidney, और इसमें हम pathway भी mention कर देंगे. Right, so this is the way how we have to attempt this question, which is for 7 marks, and space is also sufficient, and I have discussed the important points जो आपने बेटा यहाँ पे mention करने हैं while writing down the answer. Right, चले यहाँ तक बेटा कोई issue, कोई problem? If you want to ask anything regarding excretion, so you can ask, and if you don't have any issue, please do let me know through the text message in the chat box. चले, okay, thank you रुमेसा बेटा. ठीक है, I'm going to sign out now. Take care. Allah Hafiz.